So let's talk about on another topic on semiconductor, the property of semiconductor, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर हम चार बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर, नेगेटिव्स और उनका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, व्हाट आर द बेसिक नीड, I mean how they made and how it come true, or what are the role of impurity in this, है ना, which make it property very reasonable, है ना। तो basically if we talk about resistivity, है ना, so the resistivity of semiconductors is lie between a conductor and the resistivity is of the semiconductor is more than conductors and less than insulator, so this is which makes it very useful in case of to make switching device basically। तो बेसिकली इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 10 to the power -5 ओम के अप्रॉक्सीमेटली होता है। एंड एज वेल वी नो अबाउट सेमीकंडक्टर की जो सेमीकंडक्टर्स में वैलेंस बैंड होता है ना, तो वहां पर से 5 to 6 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी की नीड होती है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस, आई मीन टू जंप इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस टू दिस कंडक्शन बैंड, है ना। तो बेसिकली दिस इज द बेसिक नीड्स, और जो भी है रेजिस्टिविटी जो होती है लाई करती है इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। और द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि जो रेजिस्टिविटी होती है ना, resistivity is तो अगर ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रहा, टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो अगर नेगेटिव होता है तो इट मीन दैट कि रेजिस्टिविटी घट रही है ना। बेसिकली टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जितना ज्यादा होएगा किसी मटेरियल का, तो उसका रेजिस्टिविटी है ना टेम्परेचर कोफिशिएंट के अकॉर्डिंगली घटते उतना ही ज्यादा घटेगा। मतलब कि बेसिकली टेम्परेचर के बढ़ने पर, है ना, टेम्परेचर के बढ़ने पर जो रेजिस्टिविटी है वो लो हो जाता है, लो हो जाता है, या हम कहें रेजिस्टिविटी लो हो जाता है। तो यही आगे चीज जो है हमारा रिजल्ट देगा कि कंडक्टिविटी हाई हो जाएगा बेसिकली। तो इसको स्विचिंग डिवाइस की तरह कैसे हम यूज कर सकते हैं कि अगर टेम्परेचर लेट सपोज बढ़ रहा है तो उस केस में इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो दिस इज अ वेरी यूजफुल और हैंडी थिंग अबाउट सेमीकंडक्टर। और जो बेसिकली थर्ड प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर का, द फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर इज बाय कोवेलेंट बॉन्ड।
बेसिकली वी नो दैट जो हमारा जो भी मटेरियल हम यूज करते हैं कंडक्शन के लिए या फिर वो कॉपर या एल्युमिनियम है ना, दीज आर कंडक्टर्स। और इनका जो है 2,8,1 और 2,8,2 समथिंग लाइक दैट, इस टाइप का कुछ लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो होता है कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बैठे होते हैं, विच इज वेरी इजी टू बहुत कम इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी, यानी कि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट ऑलमोस्ट एनर्जी पर हम इन्हें बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करा देते हैं। बट यहाँ पर चूंकि फॉर्मेशन होता है कोवेलेंट बॉन्ड से, बिकॉज let us talk about some semiconductors such as we know about silicon and germanium as well. We know that the atomic number of silicon for silicon is 14 and for germanium it is 32. So let us talk about the electronic configuration. So 2,8,4 and 2,8,18,4. So basically, as we can easily see here, the last or the balance orbital for this silicon and germanium shows 4 electron in the last orbital. So thus we need a very high energy to escape these electron out of this valence band, or send them to this conduction band. तो है हाई, और ये जो हमारा एनर्जी होता है ये मिड बिटवीन मतलब लाई बिटवीन करता है, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंसुलेटर और ये जो हमारा फॉरवर्ड एनर्जी गैप होता है ये मिड लाई करता है इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के। कंडक्टर्स में तो ऑलमोस्ट ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाते हैं, और फॉर इंसुलेटर दिस फॉरवर्ड एनर्जी गैप बहुत काफी बड़ा होता है। तो वी नीड अ ह्यूज amount of energy to move these electrons from here to there. So this is not, good in a point of view of moving these kind of these things here from to here, and rest of the things are not going to work in our favor. So basically what we are talking about semiconductor that they use in a switching device है ना, तो basically what we need to them, we need a moderate energy consumption by them while we are switching them है ना। तो this is it for this property, and let us talk about the fourth one, impurity. impurity में basically जब हम किसी भी बेसिकली क्या है कि जब किसी सेमीकंडक्टर में आउटसाइड, लेट सपोज वी हैव अ सेमीकंडक्टर, और इस सेमीकंडक्टर में बेसिकली सभी एटॉम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं। सो इफ यू आर इंक्लूडिंग अ ट्राइवेलेंट impurity here, so this is going to now this intrinsic semiconductor will be converted in extrinsic semiconductor, because impurity or this process of adding impurity in this intrinsic semiconductor is called doping है ना। so this is an also a reasonable or a factual data, factual thing which we have to static data which you have to understand, और ये basically पूछा जाता है काफी एग्जाम्स में। so basically अब now this is extrinsic, or we can easily find out that जब भी हम किसी impurity को किसी सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं तो इसका जो इस सेमीकंडक्टर में जो flow of change in the rate of current वो बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में बेसिकली एक हम कह सकते हैं कि करंट बढ़ जाता है ना। तो बाय एडिंग इम्प्योरिटी वी कैन इजीली इंक्रीज द लिमिट ऑफ करंट, लिमिटेशन नहीं, एक तरीके से कि करंट की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज व्हाई वी यूज इम्प्योरिटी इन दिस। सो दिस इज ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। थैंक